दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान सोनम वांगचुक। दोस्तों आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज इनकी भूख हड़ताल को 19 दिन हो गए हैं और ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि एक व्यक्ति 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ लगातार, और उसके बावजूद भी आज भी उनका हौसला इतना बुलंद है कि शायद वो अगले 19 दिन और भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं। इन्होंने 21 दिन के भूख हड़ताल का एक आमरण अनशन किया था, जिसमें इन्होंने ये फैसला लिया था कि लद्दाख के लिए, लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ये 19 दिन का एक अनशन करेंगे। दोस्तों ये बड़ी ही हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और हमारे देश की सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। ये बड़ी अचंभे वाली बात है, क्योंकि एक व्यक्ति, सोनम वांगचुक जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शायद पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब अगर वो आज भी चाहे तो कहीं भी किसी भी बाहर कंट्री में जाकर करोड़ों रुपए में अपनी सर्विसेज देके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। परंतु हमारे देश में रहकर यहाँ, और वो भी खास तौर से लद्दाख, जो ऐसी जगह जहाँ रहना ही, वहाँ पे जीवन जीना ही बड़ा ही वैसे अपने आप में बड़े एक संघर्ष की बात है। ऐसी जगह पे वो रह रहे हैं और उनका सिर्फ कारण ये है क्योंकि वो लद्दाख से प्यार करते हैं, वहाँ के नेचर से प्यार करते हैं, वहाँ की संस्कृति से प्यार करते हैं। ये भूख हड़ताल पे सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं ताकि लद्दाख को उसका हक मिल सके, लद्दाख को लोगों का उनका हक मिल सके, और लद्दाख जो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में एक अलग थलग पड़ा हुआ है, वो एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद वहां पर विकास हो सके। खैर दोस्तों, बात है अगर आई विकास की, तो आज सोनम वांगचुक जी ने अपने वीडियो में ये भी बताया कि किस तरीके से हमने विकास के नाम पर हमारी प्रकृति के हालात खराब कर दिए हैं। हम लोग विकास तो कर रहे हैं, दिन ब दिन हम लोग तरक्की कर रहे हैं, परंतु इस तरक्की की रेस के अंदर, इस तरक्की की दौड़ के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं अपनी जो प्रकृति, हमारा जो नेचर है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। और जिस दिन ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, उस दिन मुझे लगता है इस पृथ्वी से इंसानियत नाम की, इंसान नाम की या ह्यूमन नाम की कोई ऐसी चीज जो थी यहाँ पे है, उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसका अता पता सब गायब हो जाएगा। मतलब जिस दिन प्रकृति अपना उग्र रूप दिखाएगी, उस दिन धरती पे से इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों को बचाने के लिए सोनम वांगचुक जी ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका भूख हड़ताल केवल लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंतर्गत लाना ही नहीं है, बल्कि इनकी भूख हड़ताल इसलिए भी है ताकि हमारे प्रकृति का संरक्षण किया जा सके, हमारी जो जनजातियां हैं, हमारे जो पुरानी जो लोगों की जनजातियां हैं, जो पुराना हमारा कल्चर है, संस्कृति है, उसको बचाया जा सके। खैर दोस्तों, आज उन्होंने एक वीडियो जारी करी है 19 दिन की शुरुआत में, और ये वीडियो अंग्रेजी में, और इस वीडियो में उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने नेचर को बचा सकते हैं, प्रकृति को बचा सकते हैं। और 6 शेड्यूल के अंतर्गत अगर लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है, मिल जाए, तो उसके बाद किस तरीके से लद्दाख की दशा और दिशा दोनों को बदला जा सकता है। आज उन्होंने बात करी प्रकृति के वकीलों की, यानी नेचर एडवोकेट्स की। ये नेचर एडवोकेट्स क्या है और कैसे ये लोग भविष्य में कारगर हो सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी है सोनम वांगचुक जी ने। तो आप इनकी पूरी वीडियो देखिए और इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी जो भी राय हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। एक खास बात और बता दें, क्योंकि आज 24 मार्च है, आज के दिन सोनम वांगचुक जी के साथ पूरी दुनिया में लगभग 5000 से ऊपर लोग उनके साथ एक दिन के अनशन पर बैठे हुए हैं, जो उनको समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उनका समर्थन करते हैं, आपको भी लगता है कि जो सोनम वांगचुक जी जो चीजें मांग रहे हैं, जो इनकी शर्तें हैं, वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए फायदे की चीजें हैं और हमें भी उनका समर्थन करना चाहिए, तो हमारी तमाम वीडियो, जो हम सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई तमाम वीडियो जितनी भी बनाते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये चीजें, सोनम वांगचुक जी की जो शर्तें हैं सरकार के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये जल्द से जल्द अपना अनशन खत्म कर सके। तो वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी हमें जरूर लिखें, और किस तरीके से आप सोनम वांगचुक जी को आज समर्थन में क्या कर रहे हैं आप, हमें वो भी बताएं। Good morning world. Today it's my 19th day of climate fast beginning now. Last night it was less cold because the skies were cloudy. It was -3 and together with me there were some 200 people sleeping out in the open for the safeguard of the sensitive, fragile ecology of the mountains in Ladakh, the glaciers, the unique indigenous tribal cultures. And I'm feeling a little better now after 2 days of low energy, so I'll share some ideas with you.
You know, we have done so much damage to nature in the name of development and growth. Our current concept of growth and development is so anthropocentric, so human obsessed, that we have decimated everything else, all living beings, all non-living beings that share this planet with Earth. So let me share a crazy idea. How about having nature representatives in our parliaments that can advocate for nature? The idea may shock you, but let me put it this way. Do you know that before 1920s, idea of giving suffrage or voting rights to women was shocking to people around the world? It was only in the early 1900s and finally in 1920 when US passed the law for women's voting rights that this became a normal, natural thing today. We can't even think of women not being able to vote today. Similarly, having colored people, blacks for example, to vote or run for office was just unthinkable. And after a struggle of some 100 years, finally it was in 1965 that US passed the law of all colors could vote. Today it's just unthinkable that a black person, because of his color, would not be allowed to vote. So what's next? Can we take the idea of inclusion to the next level and give nature a voice, to have nature representatives? And tomorrow it might be unthinkable for us to think that nature was never represented in our parliaments of the past. Today it's all human-centric. For example, Delhi, with an area of 1,500 square kilometers, has 7 MPs, and Ladakh, with 60,000 square kilometers, has only 1 MP, because Delhi has 20 to 30 million people and Ladakh has only 300,000 people. But Ladakh is not just these 300,000 people. It's a lot of vast wild nature, glaciers that we depend for our lives. All this is not represented in our parliaments for policy making. So how about giving such representation based on the area and sensitivity of nature and not just human population alone? And why only Ladakh? All over the world, shouldn't the elephants and the birds and the bees and the grasslands and glaciers and trees have a voice in our parliaments for making policies that make sense for them also? Of course, elephants and trees cannot speak nor choose representatives. We can help them with nature advocates. Mechanisms could be worked out on electing them, but the idea is giving them voice and true inclusion, and actually true democracy will be when they also get included. In the end, I would just say that places with fragile ecosystems like Ladakh need to be given more attention. Today, not to speak of giving voting rights to nature, even the people, the indigenous tribal people, have no voting rights. And 6th schedule is one provision in the Indian constitution that gives them autonomous councils, little assemblies, to make laws for themselves and manage these ecosystems as they see fit for their future. And that's why people are demanding 6th schedule for Ladakh and democracy restoration for Ladakh, as was promised by the current government in India 2 times in 2 elections, and we still hope that our leaders will stand by their words and keep their promises.
Thank you very much and have a great day. Jule and Jai Hind.